ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब हम न्यू सिलेबस पहले डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। सो एज पर सीबीएसई न्यू सिलेबस इन दिस ईयर, ठीक है, दिस 2021 to 22, in this year we have two terms, term 1 and term 2. This term 1 is of 40 mark plus 10 mark internal assessment. ठीक है, similarly term second 40 mark plus 10 mark internal assessment. ठीक है, अब टर्म फर्स्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है दैट इज नॉट कंफर्म, ये नवंबर और दिसंबर में होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस कैन बी इन मार्च। सो मित्री, इसके लिए मुझे बात करना है आपसे। टर्म 1 में जो भी चैप्टर्स होंगे दैट विल नॉट कम इन टर्म सेकेंड, और टर्म फर्स्ट में एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओनली मल्टीपल चॉइस, एंड टर्म सेकेंड में ये सब्जेक्टिव होगा। सो मित्री, एज पर द सीबीएसई इनका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट इज अराउंड नवंबर एंड दिसंबर, एंड नवंबर में आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे। यस सर। है ना, तो अभी कैसे प्लान हो रहा है, एनी आइडिया? सर वो शिफ्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, अगर क्योंकि हमें भी नहीं पता है कि दिसंबर में होगा कि नवंबर में होगा, तो सर जिस मंथ में होगा ना वो या तो प्रीपोन हो जाएगा या पोस्टपोन हो जाएगा। ओके, इट्स इट मींस मार्च में फिर एग्जाम होंगे टर्म सेकेंड। सर हमारा टर्म 2 तो अभी यही दिसंबर में हो रहा है, हमारा टर्म 1 तो हो चुका है। टर्म 1 हो चुका है। यस सर। ओके, अप टू लीनियर प्रोग्रामिंग। यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, चैप्टर्स हम डिस्कस करते हैं। In this one, we have relations and functions, and inverse trigonometry. Okay. Inverse and this complete is of 8 mark. Second, we have algebra, which is matrices and determinants. So मित्री, अभी कौन से चैप्टर हो रही है स्कूल में? तो अभी तो इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ओके, indefinite और definite? सब पता नहीं सर। मतलब स्टार्ट किया है अभी अभी। ओके ओके ओके, ठीक है, फिर आज हम एलपीपी कंप्लीट कर लेंगे, देन नेक्स्ट वीक वी कैन स्टार्ट द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट इज कैलकुलस। कैलकुलस कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये हम कर चुके हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, दिस इज ऑफ 17 मार्क। complete calculus is of 17 mark, and for this LPP linear programming, this is of 5 mark. So this complete हो गया 40 मार्क, और ये MCQ होगा, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव नहीं होगा। सो फॉर द फर्स्ट टर्म हमारा सिर्फ LPP रहता है, देन रिमेनिंग जो हमारे चैप्टर्स हैं वो दैट विल कम इन सेकेंड टर्म। सो कैलकुलस होगा 18 मार्क। सो कैलकुलस में हमारा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रल्स, हमारा डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, एंड बिफोर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा AOI होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सो दिस कंप्लीट विल बी ऑफ 18 मार्क, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सेकेंड हमारे इसमें यूनिट आ जाएगा वेक्टर्स एंड 3D, वेक्टर्स एंड 3D, दिस विल बी ऑफ 14 मार्क। एंड थर्ड हमारा होगा प्रोबेबिलिटी, this is of 8 marks, so this will be total of 40 mark plus then 10 mark of internal assessment. ठीक है, so please note down this. So Lakshya and Kush, अब अगर हमारे एग्जाम नवंबर एंड दिसंबर में होते हैं देन फॉर द मार्च हमारे पास 2 मंथ रह जाएंगे,
ठीक है, तो हम अभी वेट नहीं कर सकते कि दिसंबर में एग्जाम होंगे देन वी विल स्टार्ट दिस टर्म 2. सो हम आफ्टर दिस एलपीपी वी विल स्टार्ट टर्म सेकंड चैप्टर्स एंड पैरेलली आपके टेस्ट होते रहेंगे. ठीक है, अब इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे दैट आई विल गिव यू सम न्यू असाइनमेंट्स फॉर दैट. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस और इफ यू विश यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट. फिर हम फर्दर चैप्टर डिस्कस करते हैं. सर जी मित्री. सर एक चीज पूछनी थी सर, इसमें जो टर्म 1 है एमसीक्यू वाला, सर जी, इसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे? इसमें बच्चे आपके पास केस स्टडीज आ सकते हैं, आपके पास असर्शन रीजन टाइप्स आ सकते हैं. फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शंस होंगे, यू नीड टू सिलेक्ट वन. और रीजनिंग असर्शन आ सकता है कि देयर इज अ क्वेश्चन, उसका कुछ रीजन होगा एंड यू नीड टू सेलेक्ट दैट रीजन इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जस्ट रिसेंटली आया है, सो अभी इसकी बुक्स भी इतनी मार्केट्स में नहीं है. ठीक है, तो अभी हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अब उसके बेस पे क्वेश्चंस आप करेंगे, आपको कोई इशू नहीं होगा. ये सर सर मुझे एक चीज पूछनी थी, उसमें मतलब मैंने भी पढ़ा था रिवाइज सिलेबस में कि केस स्टडी आएंगे और असर्शन आ सकते हैं और सिंपल एमसीक्यू आ सकते हैं. सो हमारे स्कूल में बोला जा रहा था कि मोर देन वन करेक्ट एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस भी आ सकते हैं. दैट कैन बी पॉसिबल. ठीक है, अच्छा. सो मेरी थोड़ा सा हम और पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, एलपीपी कंप्लीट करते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं. अभी मार्केट में बुक्स नहीं आई थी इसकी, थोड़ा सा ये इशू था. सो आई गेस अब आ जानी चाहिए. सो विल प्रोवाइड यू द असाइनमेंट फ्रॉम दैट. ठीक है, बट द मेन थिंग इज हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड वी नो दैट हाउ टू डू द क्वेश्चंस. उसके बाद हमें कोई इशू नहीं आएगा. सो वो पार्ट हम कर चुके हैं. सो अब सिर्फ हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, सो दैट विल नॉट टेक सो मच टाइम. ओके सर. सो नेक्स्ट स्टार्ट करें. नोट कर लिया सबने? यस सर. ओके. ओके, नेक्स्ट हमने लास्ट एओडी डिस्कस किया था. ओके ओके, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड सॉरी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, ये मिस हो गया. सो वी हैव कंप्लीटेड बोथ दीज चैप्टर्स. एओडी में अब 3 टॉपिक्स है व्हिच वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. नाउ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, वेरी स्कोरिंग. सो उसमें पहले हम ये देखते हैं कौन सा पोर्शन कट हो गया है. ठीक, सो इन दिस वन वी हैव एक्सरसाइज 12.1, वी हैव एक्सरसाइज 12.2 एंड वी हैव मिसलेनियस. सो 12.1 थोड़ा सा हम इसको चेक करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. जैसे आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस किया था. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. जैसे आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशंस किया था. इन लीनियर इक्वेशंस आपके पास 2 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम थी. फर्स्ट, यू नीड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफ एंड सेकंड, यू नीड टू मेक द लीनियर इक्वेशन. ठीक है, आपको लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी. आप पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते थे, देन यू सॉल्व इट. सो सिमिलरली अगर हम इसको कंपेयर करें लीनियर प्रोग्रामिंग में भी वैसे ही है. In exercise 12.1 we have direct questions which we need to solve by the graph. Exercise 12.2 में we have the word problems. So if we check the syllabus of CBSE revised syllabus, तो उसने word problems नहीं दिया है, so word problems नहीं आएंगी. Now in exercise 12.1 there are 2 types of questions. यहाँ questions पहले आते थे bounded and unbounded. ठीक है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड. सो बाउंडेड सिलेबस में है आपके पास, अनबाउंडेड रिमूव हो गया. सो प्लीज मार्क इन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 9. 4, 6 एंड 9 दीज आर डिलीटेड. ठीक है,
So 4-6 question number 469 in exercise 12.1. Please can delete these questions. ये हमें नहीं करने हैं because these are based on the unbounded. ये unbounded questions थे, so ये अब नहीं करना है हमें. This is not in syllabus. फर्स्ट थिंग तो ये होगी एक्सरसाइज 12.1 में हमें इसको डिलीट करना है. एक्सरसाइज 12.2 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. सो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा वर्ड प्रॉब्लम हम करते हैं क्योंकि केस स्टडीज में हमें वो यूज में आ जाएगी. सो वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ भी नहीं है. जैसे क्लास 10th में आप करते थे, आप फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन फॉर्म करने हैं. सिमिलरली आपको यहाँ भी इक्वेशन फॉर्म करना है. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हम उसको कर लेते हैं. मिसलेनियस हम नहीं करते हैं, उसमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टफ हो सकते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं है, बट रिमूव दिस. 12.2 भी नहीं आनी है, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केस स्टडी में हो सकता है कोई क्वेश्चन हो जाए. इसको हम करते हैं, दैट विल हेल्प अस इन द केस स्टडी क्वेश्चंस. ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस. लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें कौन सा पोर्शन नहीं करना है, 469 करना है, इसको हम कर लेते हैं फिर. ठीक है, प्लीज लेट मी नो वंस यू कंप्लीट दिस. हम स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग. अच्छा, मुझे प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दिएगा. ओके लक्ष्य. डन सर. ओके कुश. डन सर. ओके देन हम स्टार्ट करते हैं फिर. ओके, सो टाइम वेस्ट नहीं हो, वी ऑलरेडी हैव दिस थ्योरी. नोट करें. लीनियर प्रोग्रामिंग होता है क्या. ठीक है, फर्स्ट थिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सम अमाउंट एंड यू नीड टू बाय सम चेयर्स और टेबल्स. सो हाँ, आप उस अमाउंट को कैसे इन्वेस्ट करेंगे सो दैट आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो और लॉस मिनिमम. ठीक है, सो लीनियर प्रोग्रामिंग में दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आती हैं कि जहाँ हमारे पास कुछ अमाउंट होगा, एनीथिंग वी हैव, और हमें उसमें किसी पार्ट को मैक्सिमाइज करना होगा. सो प्रॉफिट है तो वो मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक, और लॉस है तो वो हमारा मिनिमम, सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए एंड लॉस हमारा मिनिमम होना चाहिए. सो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इट कंसर्न विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू. सो व्हाट इज ऑप्टिमल वैल्यू. ऑप्टिमल वैल्यू मींस जो भी पार्ट हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है और लॉस है, सो दैट विल कम अंडर दिस. With finding the optimal values, so optimal value is called the objective function. और वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल टेबल चेयर्स, दीज आर ऑल वेरिएबल्स, और यहाँ कुछ कंडीशंस होंगी. ठीक है, एंड दैट कंडीशंस आर कॉल्ड द कॉन्स्टेंट्स. जो भी वेरिएबल होंगे वो हमारे नॉन नेगेटिव होंगे. फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू बाय सम चेयर्स और वी नीड टू बाय सम टेबल्स, सो वो नॉन नेगेटिव होगा. वी कांट से दैट वी नीड टू बाय -1 चेयर. ठीक, सो लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, यहाँ हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे which are called the optimal function. For example profit or loss, जिसको हमें maximize और minimize करना होगा under certain conditions. कुछ conditions होंगी and that condition should be non-negative. ठीक, please note down this. और प्लस डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं. लीनियर मीन्स जो भी आपका रिलेशन होगा, लीनियर जो भी आपका रिलेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द लीनियर. And programming means method of determining particular program or plan of a function. ठीक है, programming means determining that particular problem, or we can say programming to solve that problem is called programming. ठीक, please note down this, फिर further हम definitions के डिस्कस करते हैं.
Would you please confirm me once you note this? Mitri, क्वेश्चन लक्ष्य कंप्लीट हो गया? ओके, क्वेश्चन लक्ष्य Mitri. Mitri and Lakshya, please मुझे confirm कीजिए if you have completed this. ओके Mitri, लक्ष्य कंप्लीट हो गया? ओके, then please note down this. फिर आपको मैं explain करता हूँ that what are these steps. Would you please confirm me if you have noted this?
Okay, Kush. Lecture में 3 completed. Okay, lecture completed. Lecture. Okay, okay, very good. Okay, now we will discuss that what is objective function and the constraints. So, for example, we need to buy some tables and chair. Okay, on a table, the profit is on one table. Profit is suppose rupees 50, and on a chair, profit is okay, per unit. Profit is equal to suppose rupees 100 per unit. Okay. Now, suppose we have decided that we will buy X table and Y chair, X number of tables and Y number of chair. So first thing, X should be greater than equal to 0 and Y should be greater than equal to 0. Okay, this is the first thing. कि less than 0 नहीं हो सकता. This should be either equal to 0 कि हम कुछ भी table buy नहीं करेंगे and from our amount we will just buy chair only, or this can be greater than equal to 0. So these are some conditions. So these conditions, these are called constraints. Constraints. Okay. Or for example, you just have rupees 3000. Okay, and suppose one table, or इसमें data और कर लेते हैं, one table cost, for example, 400 per unit, and chair cost, one chair cost is equal to 300. Okay. One table costs 400, one chair costs 300, table profit is 50, chair profit is 100 per unit, and we have decided that we will buy X number of table and Y number of chair, and total amount we have is, अभी इसको नोट नहीं कर रहे हैं, we will do these types of problems. Total amount हमारे पास है 3000. So first thing, if we buy X chair, X table and Y chair, then total amount कितना हो जाएगा? Total amount कितना होगा? X into 400, 400X plus 300Y. So can we say that 400X plus 300Y, हमारा जो, this is the total amount and the total money we have is 3000. So can we say that this should be greater than equal to 3000? मेरी क्वेश्चन लक्ष्य ये पार्ट क्लियर है? Yes, sir. है ना, हम जो भी मनी स्पेंड करेंगे दैट इज फ्रॉम 3000, तो हमारा जो टोटल अमाउंट स्पेंड होगा दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3000. सेकेंड, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. So these are called the constants. These are called constants. Now a profit कितना है on a table? The profit is rupees 50. So profit कितना हो जाएगा? Profit is 50x plus 100y. ठीक है, हमने y शेयर बाय किया, सो आवर प्रॉफिट इज 100y. ये हमारा प्रॉफिट हो गया. ठीक, अब हमें क्या करना है? दिस प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए. सो इस पार्ट को, इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है. सो दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो भी फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज डिनोटेड बाय z. दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. So objective function क्या होगा? The function which we need to maximize or minimize. For example, profit we need to maximize, loss we need to minimize. So this is objective function. अब maximize or minimize करना कैसे? Under certain conditions. These are the conditions. This table and chair should be greater than equal to 0. This total should be less than equal to 3000. So these inequalities, these are called the constraints, and this function is called the objective function. So this we have written in this definition, that this function which has to be maximized or minimized. ठीक है, objective function को we will denote by a capital Z
and this should be maximized or minimized is called the linear objective function. This is the first thing. Second, constraints. Linear inequalities होंगी, that we will call them as constraint. Third, optimization problem क्या होती है? The problem which seeks to maximize or minimize a linear function. ठीक है, जिन problems में हमें maximize या minimize करना होता है उसको हम कहते हैं optimization problem. So कुश, मेत्री and लक्ष्य clear हो गया. These two are important. ये हम बार बार use करेंगे, objective function and constraints. So clear? What is objective function and what is constraints? Okay, कुश, मेत्री and लक्ष्य. Okay, so Lakshya, can you tell me what are objective functions? The objective function which has to be maximized or minimized. Okay, and what are constraints? The constants are the conditions or Very good. Okay, the objective function should be maximized or minimized under certain conditions. That condition is called the constants. Okay. Then please note down this: feasible region, infeasible. Then I will explain you this one. Please confirm me if you have noted this. Next start करते हैं. मित्री एंड लक्ष्य कंप्लीट हो गया. मित्री एंड लक्ष्य completed. Yes, sir. Okay, लक्ष्य done. लक्ष्य okay, okay. Then बच्चे इसको और कंप्लीट कर लेते हैं. Then I will explain you all these points. Any point in the feasible region?
प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम डिस्कस करते हैं ऑल डेफिनेशंस. Done, sir. Okay. And Lakshya and Kush, done. Yes, sir. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं फिर. लक्ष्य हो गया था ना कंप्लीट? Yes, sir. ओके ओके, चेक करते हैं फिजिबल रीजन क्या है. नाउ वी हैव दीज इनइक्वालिटीज. ठीक है, सॉरी, वी हैव दीज इनइक्वेशंस. सो लास्ट ईयर आपने प्रॉब्लम्स किया था जहां यू ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द लीनियर इनइक्वेशन. सो लीनियर इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे होता है? सो for example we have x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. Example लेते हैं, कोई simple examples. For example tan x plus 20y, this is greater than equal to 100. ठीक है, we have these in equation. So anyone can tell me how can we draw the graph of this? So points देके x and y के बिल्कुल ठीक है. linear. बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं tan x plus 20y. सो करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियर इन इक्वेशन है, but please draw the graph of linear equation. Now, so linear equation का graph हम कैसे draw करेंगे? Example this one, we will take a points. X and y, ठीक है? Put x 0, so y कितना हो जाएगा? 5. Put y 0, x कितना हो जाएगा? 10. ठीक है? There is no need to take the third point. ठीक, वो हम जूनियर क्लासेस में करते थे. Just take 2 points, x and y. Put x 0, y 0. You will get the points. So, for example, this is 0. This is 5. This is 10. This is 5. This is 10. So first point is 0, 5. So 0, 5 will lie over here. Second point is 10, 0. So 10, 0 is here. So हम एक graph draw करते हैं. Okay, there's a line. Now always remember, if this is greater than equal to 0, if this one is greater than equal to 0, then you need to draw a dark line. ठीक है? If this is only greater than 0, for example tan x plus 20y greater than 100, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा होता है, then we will draw the dotted line. First thing, remember this. ठीक है? So equal to 0 is, so we will draw a dark line, and greater than 0 is, then we will draw a dotted line. Next, x is greater than 0. So anyone can tell me what is the graph of x is equal to 0? x is equal to 0 क्या होता है? y-axis. y-axis, very good. ठीक है? Now y-axis क्या है? This one, we will draw a graph on this. So ये हमारे line आ गया. Now अब next is y is greater than 0. Y is greater than equal to 0 means x-axis. Okay. So we have draw the line. Now ये हमने simple lines draw कर ली. अब हम चेक करते हैं how can we find the region. So first this tan x plus 20y greater than equal to 100. So we have this line. Please check, ये आपकी जो line है, this is tan x plus 20y greater equal to 100. ठीक है, लाइंस पे भी हम कर देंगे so that examiner को प्रॉब्लम नहीं हो कि कौन सा ग्राफ हमारा किस लाइन का है. So this is y is equal to 0, this is x is equal to 0. So this line divide this complete plane. ये एक plane है. This line divide this plane into two parts. This is the first part and this is the second part. ठीक है, this line has divided this complete plane into two parts, first and second. Now either first part will be your solution or the second part will be your solution. ठीक है, इसने डिवाइड कर दिया टू पार्ट्स में, फर्स्ट एंड सेकंड. सो एदर फर्स्ट पार्ट इज आवर सॉल्यूशन और सेकंड पार्ट इज अ सॉल्यूशन. सो हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल सपोज सेकंड पार्ट इज आवर सॉल्यूशन. अगर सेकंड हमारा सॉल्यूशन है तो इस सेकंड पार्ट में जितने भी पॉइंट्स होंगे दैट विल सेटिस्फाई द इनइक्वेशन.
So what is the method? हम two parts हैं, in either of the part we can select any point and we will put in the equation. For example, from second point हम origin put करते हैं, ठीक, put in this one 0 plus 0 greater than, ठीक है, equal to greater than equal to 100. This is true or false? So false. False. So हमने एक point put किया from the second part and this is not satisfying this in equation. इसका मतलब ये हमारा solution नहीं है. अगर ये solution नहीं है तो next solution हो जाएगा, ठीक है, ये solution हो जाएगा. So हमें करना क्या है? That line will divide the complete plane into two parts. From either of the part you can put any point. If that point satisfies an equation, then that part will be the answer. अगर वो satisfy नहीं कर रहा है तो second part answer हो जाएगा. So for example, in this case, ये answer नहीं होगा, ये answer हो गया हमारा, ठीक है. This complete is the solution for this. Now ये हमारा कौन सा ग्राफ था? X is equal to 0. So for this, X is greater than equal to 0. So इसने क्या किया? This divide this plane into two parts, first and second. You know? So from any of the parts we can put any point. अब हम origin put नहीं करेंगे because origin lie on this line. तो वो नहीं लेने, हम right से put करते हैं. For example 5,0 this point, इसको put करते हैं. X is greater than equal to 0. अगर हमने यहाँ put किया 5 is greater than equal to 0. So this is true or false? So true. This is true. So it's mean this part will be our answer. This complete one. Second thing, y is greater than equal to 0. Y is greater than equal to 0. So कोई point हम put करते हैं, ये था, so ये put कर देते हैं 0,5. So 0,5 means 5 is greater than equal to 0. This also satisfy. So this upper part, this will be a solution. So अब हमें common region find करना है. तो common क्या था? इसके top में common find करते हैं, तो हमने सब shade कर दिया था. Common क्या हो जाएगा? इसका this part, इसमें right part, इसमें upper part. So this part will be our solution. So इसको, ये जो हमारा part होता है, this is called the feasible solution. Sorry, this is called the feasible region. ठीक है, feasible region क्या होगा? From the constant, from the inequations, आप जब graph draw करेंगे, then आपका जो common region होगा, आपका जो भी common region आएगा, that is called the feasible region. Clear हुआ? कुछ लक्ष्य में थी, what is feasible region? Yes, sir. So feasible क्या होगा? हमारे जो भी common region है, that is called the feasible region. अब आपने देखा, this is a unbounded. ये जो हमने graph draw किया है, this is unbounded. Boundation नहीं है. So ये होता है हमारा unbounded type. And suppose, ठीक है, एक example लेते हैं. Suppose हमारा जो common region था वो है this one. So this is bounded. This is bounded. ठीक है? This is bounded. So if you will check the CBSE syllabus, the revised syllabus, उन्होंने mention किया है bounded. So we will do the questions of bounded only. Unbounded हमारे syllabus में नहीं है. That's why in exercise first 4, 6 and 9 मैंने आपसे मना किया था. वो unbounded type है. वो हमें नहीं करना है. We will just do the bounded type. So feasible region clear हो गया. So for example, if this is a feasible region, common region, this is called feasible. And other than this, everything is infeasible. ठीक है, अब definition check करते हैं. So what is feasible? The common region determined by the constant including non-negative constant. यानी x, y greater than equal to 0. These are called the non-negative constant. क्योंकि positive देता है आपको. So इसको हम feasible कहते हैं. ठीक है? And what is infeasible? Region other than feasible. For example, in this one, if this is feasible, then outside this, other than this, everything is infeasible. So Lakshya, Maitri, Kush, feasible, infeasible, clear हो क्या? Yes, sir. Okay, so there's no need to note this. ये हम questions करेंगे, वहाँ पे repeat होगा. So we have done this feasible region. We know that what is infeasible, or we will do the questions of only bounded type. Unbounded अब हमारे syllabus में नहीं है, पहले था. Next is feasible solutions. क्या होते हैं? Point within and on the boundary of the feasible region represent feasible solutions. So ये अगर हमारा common region है, then every point on the boundary, यानी on this one,
every point on the boundary on this and inside this, ये जितने भी points होंगे ये आपकी सारी इन equations को satisfy करेंगे. So these are called the feasible solutions. तो feasible region में आपके जितने भी points होंगे that are called the feasible solutions. ठीक है. So feasible solutions क्या होगा? Point within and on the boundary of the feasible region represented by feasible solutions. ठीक है. Any point outside the feasible region is called infeasible solution. Clear हो गया? Feasible region clear हुआ. यहाँ जितने भी points होंगे these are called the feasible solutions. Outside this जितने भी points होंगे these are called the infeasible solutions. So Lakshya, Maitri and Kush, ये भी clear है? Yes. Yes, sir. Okay. So next is optimal solution. फिर ये repeat हो रहा है. What is optimal solution? Any point in the feasible region that give the optimal value. ठीक है. Feasible region में कोई भी point जो आपको maximum या minimum value देता है that is called the optimal solution. So ये समझ में नहीं आया, not a issue. अभी हम करेंगे, फिर ये आपको clear होगा. So ये तो हमें clear हो गया कि feasible region कैसे find करना है. Now a theorem is, but हमारे पास questions कैसे होंगे? क्वेश्चंस होंगे हमारे पास लाइक दिस. आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा, वो क्या, और आप कांस्टेंट्स गिवन होंगे, वो कहेगा कि मैक्सिमाइज दिस शुड बी मैक्सिमम. सो हमें पॉइंट्स फाइंड करने होंगे. बच्चों मैं ब्रेक ले रहा हूँ 2 मिनट्स. Okay, so we continue करते हैं. We need to maximize this. Okay, this objective function, this should be maximum.
So what we will do, हमारे feasible solutions क्या हैं? All these points, यहाँ जितने भी points होंगे, this will satisfy the inequalities. So this is not possible for us to put every point. यहाँ हमारे काफी points हैं, infinite we can say, there are infinite points in this, and this is not possible that you put all the points. So फिर आप बताएं कि for this point the function have the maximum value. Okay, so what we will do, we have a theorem, and the theorem is if R is the if R is the visible region of a linear programming, is a visible region of a linear programming problem, and let z is equal to ax plus by be the objective function if R is bounded, then Z have both maximum and minimum value, and this occur at the corner point of the visible region. Okay, so if R is bounded, then Z have both the maximum and minimum value, and this will occur at the corner point. So if we will take the same example, then in this case Z should be maximum. So maximum कहाँ होगा? At maximum or minimum कहाँ होगा? At the corner points. So what we need to do, we need to draw the graph, we need to find the visible region. हमारे syllabus में सिर्फ bounded है, अब bounded के case हम नहीं लेंगे. In the bounded, find the corner points. फिर आपको क्या करना है? Corner points को put करना है in Z, और फिर आपको वहाँ check करना है कि which is the maximum or the minimum value. इतना clear हुआ? May 3 question लक्ष्य. सर तो हाईएस्ट वैल्यू फाइंड भी करनी है? हाईएस्ट वैल्यू फाइंड भी करनी है हमें. तो हम कैसे करेंगे? हमने ग्राफ ड्रॉ किया, कॉर्नर पॉइंट्स आगे पुट कर दिया, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी आवर आंसर. अगर वो मैक्सिमम कह रहे हैं, मिनिमम, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे. ओके सर. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस थ्योरम. उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. But you please confirm me if you have noted this. फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दैट्स इट. ओके, लक्ष्य, कुश, डन. Done, sir. Okay, please write this question. Question is solve. Okay, and एग्जाम में आपको ग्राफ मिलेगा. ठीक है, अभी हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो हम इसको विदाउट ग्राफ सॉल्व करते हैं. कोई इशू नहीं है काम में. सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग
ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कि वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस. सो ये क्या होगा लक्ष्य? विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? लक्ष्य, विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस? ये मैक्सिमाइज होना चाहिए, तो कैसा होगा ये? Objective function. ऑब्जेक्टिव. बिल्कुल ठीक है मित्र. लक्ष्य, this is the objective function, this should be maximized and these are the constants. So with the help of these constants हमें graph draw करना है. We need to find the corner points को put करना है and that will be our answer. So check करते हैं कैसे करेंगे हम. First thing is x plus y less than equal to 50. ठीक है. So x plus y is equal to 50. इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. This is x, this is y. Okay, put x 0, we get y 50. Put y 0, we get x 50. We'll draw the graph. फिर है 90. So हम 10 का फिर ले लेते हैं ना, अदरवाइज थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा. So we will take 0, we'll take 10, we'll take 20, we'll take 30. So this is 10, this is 20, this 30, this 40, this is 50, this is 60. ठीक, मुझे space कम है, so I'm extending this. $70, $80 and 90. Okay, 30s, for example, 40 and 50. So first point is 0, 50. So that will lie over here. Next is 50, 0. 50, 0 over here. So graph draw करते हैं. Okay, so this is the equation. Equation हमें लिखना है इधर x plus y is equal to 50. अब region हमें decide करना है कौन सा region होगा. So let this be first. So put region put करना better होता है, वहाँ calculation नहीं करनी होती है. Put 0, 0 in first, तो कितना हो गया? 0 is less than equal to 50, which is true. So region towards the origin. Region towards the origin is the solution. Is the solution. ठीक है. So for this line जो solution होगा towards the origin. For example this. So इसको आप हल्के से highlight कर लें, so that बाद में हमें issue नहीं है. After this, next our equation is 3x plus y less than equal to. Next is 3x plus y less than equal to 90. We'll draw the graph. 3x plus y equal to 90. So this is x, this is y. X is 0, y 90, y is 0, x is 30. So these are the points. Second has 0, 90. So 0, 90 will lie over here. And next is 30, 0. 30, 0 यहाँ हो जाएगा. We'll draw this. Now again, put 0, 0 in. इसका हम लिख देते हैं. This is what? 3x plus y is equal to 90. Always write this equation. So put 0. Let this be second. Put 0, 0 in second. तो ये कितना हो जाएगा? 0 is less than equal to 90. So region towards the origin is the solution. Towards the origin is the solution. Is the solution. ठीक है. Towards the origin means this one. So ये complete हो जाएगा. But
प्रीवियस लाइन में ये नहीं था तो हमें ये नहीं चाहिए होगा ना, तो हमें सिर्फ कितना चाहिए होगा, दिस पार्ट, ओनली दिस, इसके बियॉन्ड भी नहीं जाना है, ओनली दिस वन। थर्ड एंड फोर्थ है हमारे पास x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. So this will always give you the first coordinate. X is greater than equal to 0 means y axis. यहाँ लिख देते हैं x is equal to 0, this is y is equal to 0. This will give us the region in the first quadrant. So अब हमारे पास जो final feasible region हो गया, that is what? That is this one. ये हमारा feasible region हो गया because this is a common one. ठीक है, ये भी नहीं लेना है हमें, so this is the so एक corner point ये हो गया हमारा, second corner point is this, third corner point is this, and fourth corner point is this. Okay, Lakshya, please tell me what is this point? Lakshya, ये point कितना होगा? 0, 50. 0,50, very good. Lakshya, ये point कितना होगा? तो कौन सा? This one? तो 0, 0. 0,0, very good. This one? So 30, 0. 30, 0, very good. Now this, अब अगर आप ग्राफ में ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको एक्यूरेट पॉइंट मिल जाएगा, बट सपोज इफ यू डोंट हैव द ग्राफ, कैसे फाइंड कर सकते हैं पॉइंट? सर इक्वेशन सॉल्व करके, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू, अगर ग्राफ है ना उसके बाद भी प्लीज इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, वो आपको एक्यूरेट आंसर दे देगा, ठीक है। ग्राफ में थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक किया, यहाँ इशू आ जाएगा। सो करना क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, सो x इज इक्वल टू 20, तो 20 तो ये y 30 हो गया। सो दिस पॉइंट इज 20,30, तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। इफ यू विश इसको भी आप नोट मत कीजिए, आई विल गिव यू अ न्यू क्वेश्चन। सो करना क्या है फिर आपको, यू नीड टू मेक अ टेबल, देन फिर आपको क्या करना है, जस्ट राइट द कॉर्नर पॉइंट्स corresponding value of z, corresponding value of z is equal to, z क्या था हमारा, z is 4x plus y, 4x plus y. So write all the corner points. So first is 0,50, next is 0,0, next is 30,0, and next is 20,30, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, जिससे यही पॉइंट्स हैं 20,30, 0 and 30,0, ठीक है। नाउ पुट ऑल दीज पॉइंट्स इन दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 50 इज इक्वल टू 50, नेक्स्ट कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, नेक्स्ट 30, सो 120, नेक्स्ट 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110। सो ये हमारे पॉइंट्स आ गए, हमें क्या चाहिए था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सो दिस इज द मैक्सिमम, सो लिख देते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is equal to 4x plus y is 120 and occur at, इसको नोट मत कीजिएगा, we will start a new question, and occur at 30,0, ठीक। सो प्लीज रिमेंबर ग्राफ है, देन ऑल्सो अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट हो रही हैं देन प्लीज उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि आपने गलत प्लॉट किया, वो डेसिमल में आपको मिल जाए। एनी डाउट, मैत्री, लक्ष्य एंड कुश? नो, ओके, अच्छा ये फाइंड कर चुके थे मैत्री, ओके वेरी गुड, ठीक है। सो सिंपल चैप्टर है, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, और फिर वी नीड टू फाइंड द corresponding value of z, okay। So let's write one more question, और इसको प्लीज आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन इज solve the following linear programming
solve the following linear programming problem graphically. Minimize z is equal to 200x plus 500y subject to the constraint x plus 2y greater than equal to 10, 3x plus 4y less than equal to 24, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. ठीक है? Please try this question. Draw the graph, find the corner points, and tell me the final answer. कुछ 0,0 आपका बाउंडेड में नहीं आ रहा है, ठीक है, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप. एनीवन कैन टेल मी द कॉर्नर पॉइंट्स? 1 मिनट सर. ओके.
Yes, sir. Okay, Mitri, then what are the corner points? So A, B, C है और A है 0, 6, 0, 6, B है 4 and 3 4 and 3, very good. and C है 0, 5. 0, 5, very good. This is correct. ठीक है. Kush, please check कीजिए. These are the corner points. So Mitri, can you tell me what's the minimum value and at which point? Yes, yes, sir. बस 1 minute. Okay, okay, okay. Yes, sir. So उसकी minimum value second point में 4, 3. Very good. And what is the minimum value? 2,300. Very good. 2,300. Kush, very good. Your answer is correct. Kush, clear हो गया? अब तो नहीं आ रहा origin? Yes, sir. Okay, okay. Lakshya, completed? Yes, sir. Complete. Lakshya. Done? Lakshya, voice audible नहीं थी आपके. Completed Yes, sir. this? Completed. Okay, okay. Very good. ठीक है. So, as per CBSE, हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं. ठीक है. आप वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है सिलेबस में, बट 2-3 प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं दैट कैन हेल्प अस इन द केस स्टडीज. और इन केस कुछ एक्सटेंड हो जाता है, सपोज अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो हमें कोई इशू नहीं हो. ठीक है. बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में. और अगर प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है आपके पास, आई विल सजेस्ट यू जस्ट डू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स. ठीक है. 4-5 एग्जांपल्स हैं दैट विल कवर द एवरी टाइम. तो एग्जांपल लेते हैं. there is no need to write this. Dietitian wishes to mix 2 types of foods in such a way that vitamin content
cost is minimum, cost should be minimum. ठीक, मैं complete language नहीं लिखी last में, cost should be minimum. We need to form a complete linear programming problem और cost minimum होना चाहिए. ठीक है, please read this complete language और फिर please tell me how can we solve this. ठीक है, बहुत simple questions हैं, word problems हैं. We will just make the inequations and objective functions solve आपको करना आता है. ठीक है. Yes sir. First of all, please tell me हम क्या let करेंगे. So हम लेट करेंगे A and no विटामिन A and C के यूनिट्स को. Okay. So X and Y. So it's mean vitamin A हम let कर लें x kg and vitamin B हम let कर लें y kg. This correct? Yes. Okay. In the last statement, they are saying that cost should be minimum. ठीक है, cost minimum होने चाहिए. So Mithri, this means objective function हमारा in terms of cost होगा. Yes sir. है ना. Okay. Now अब given क्या था? It costs ₹50 per kg to purchase food 1 and ₹70 per kg to purchase food 2 second. So cost हमारा क्या हो रहा है? That in terms of food. और हमने let क्या किया है? हमने let किया है vitamin A be X and vitamin B be Y. So with the help of these two, how can we make a objective function? Yes sir. Cost करना था. Okay, तो हम अब क्या let करें? So cost X. Cost of food one is X and But cost तो given है. Cost is 50 per kg. 1 kg का cost given है. So what can we let in this case? सर नंबर ऑफ मतलब सर जैसे पर केजी दिया है तो हमें नहीं बताना कितना ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ फूड 1 करेंगे एक्स. Let food 1 be x kg करते हैं. ठीक है, यस सर. क्योंकि यहाँ kg given है. And let food second be y kg. So first of all, we will make the objective function. हमें थोड़ी सी clarity मिल जाएगी. So Mithri, what is it? सर 8x plus 10y. Z क्या होना चाहिए? Z should be मिनिमम. हाँ minimum, but this should be in terms of cost. Cost कितना था? ₹50 per kg. So Z कितना हो जाएगा? 50x plus 70y. 50x plus 70y. Very good. So Lakshya and Kush, ये clear हो? Lakshya and Kush. Good Kush. Lakshya, objective function clear हो? बिल्कुल ठीक है. ओके, नाउ प्लीज टेल मी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया. हमें और क्या चाहिए? वी नीड द कांस्टेंट. तो हमने एक्स वाई लेट किया, सो वी नो दैट दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है लक्ष्य एंड कुछ, ये तो है. इसके बाद in such a way that vitamin content of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and this one food contains 2 units per kg of vitamin A. ओके, अब क्या होना चाहिए? उसने कहा कि एटलीस्ट विटामिन ए 8 यूनिट्स होना चाहिए. विटामिन ए एटलीस्ट मींस विटामिन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 टू टाइम इन सच अ वे विटामिन कंटेंट एंड 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी जो है हमारा विटामिन सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. ठीक है, ये गिवन है. विटामिन ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, विटामिन सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10. सो हमने ये कर लिया. अब देखिए क्या क्या हम यूज कर चुके हैं. ये हमारा यूज हो गया, प्लस ये हम अब चेक कर रहे हैं. अब के फूड 1 कंटेन 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए. 1 केजी फूड 1 में विटामिन ए कितना है? 2 यूनिट्स. तो x केजी में कितना होगा? 2x. वेरी गुड. नेक्स्ट फूड सेकेंड में विटामिन ए कितना है? 1 यूनिट है पर केजी में, यानी सेकेंड फूड y में विटामिन कितना होगा? y. विटामिन को हम ऐड कर देते हैं. दिस इज विटामिन ए, सो 2x plus y, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8. लक्ष्य एंड कुश, ये पार्ट क्लियर हुआ?
ओके लक्ष्य, ये क्लियर हुआ? So, ओके लक्ष्य, देन प्लीज टेल मी व्हाट इज द सेकंड इन इक्वेशन। विटामिन ए से हमने फॉर्म कर लिया, विटामिन सी से मुझे जल्दी से बताइए लक्ष्य, क्या होगी इन इक्वेशन? विटामिन बी चेक, सॉरी विटामिन सी चेक कीजिए लक्ष्य। विटामिन सी क्या था? ये 1 kg of food one consists of 1 unit and x एक और plus y very good is x plus y, this 2y, 2y, x plus 2y should be greater than equal to 8, this one है ना, 10, greater yes. than 10. So ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए, दिस एंड दिस सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है? एनी डाउट? तो एक चीज पूछनी, जी श्रीमित्री बताइए। सो हम z को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं कर रहे हैं? उसने, हाँ z को हम करेंगे ना, उसने कहा है ना कि कॉस्ट शुड बी मिनिमम, सो दिस इज द कॉस्ट, ये कॉन्स्टेंट्स आ गए। अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स एंड यू कैन फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फॉर दिस। यस सर, एक और चीज पूछूंगी सर, हम z को, z में जो आपने इक्वल लिखा है सर, हम उसमें ग्रेटर देन या लेसर देन नहीं लगा सकते? क्यों? सो क्योंकि उसे मिनिमाइज करना है, अगर करना हो तो। हमारा z है क्या 50x प्लस 70y, दिस इज z है ना। इसको आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये z होता है मित्री, ठीक है, दिस इज z, सो इट्स मीन z इज इक्वल टू दिस। हम ये नहीं कह रहे कि z इससे ग्रेटर होगा या z इससे इक्वल होगा, दिस इज कॉल्ड z। आपने जो भी इक्वेशन फाइंड करी है वो z है ना। आप अगर कह रहे हैं कि मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए तो करेक्ट शुड बी लाइक दिस, कि ये जो कॉस्ट है ये अगर सपोज क्वेश्चन वो देता कि कॉस्ट आपकी जो है दैट शुड बी, फॉर एग्जांपल यू हैव टोटल अमाउंट 1000, वो कहता है कॉस्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस, तो लेस देन इक्वल टू 1000 कर देते। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं ये यही z होता है, दैट्स व्हाई वी हैव इक्वेटेड z विद दिस। ओके सर। मित्र डाउट यही था या कुछ और डाउट यस था? सर, यही डाउट था कि उसमें साइन कब लगाना है। ओके ओके, z में हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। ओके सर। Please note down the homework. Homework is exercise 12.1 and 12.2 कंप्लीट करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इन पेज 515 to 518, okay, यहाँ solved examples हैं। So if you don't have the time to complete the complete exercise 12.2, वो simple है, अगर नहीं है just do the solved examples, वो आपके सारे types cover हो जाएंगे, ठीक है। So you need to do this exercise 12.2 if you have the time, then आप कर सकते हैं, नहीं है ये 4 and 5 एग्जाम्पल हैं, एक हम कर चुके हैं, प्लीज डू दिस, सो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टर्म आवर सिलेबस इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीक हम प्लान करते हैं कि अब आपके टेस्ट स्टार्ट करते हैं, प्लस आपका जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो, और नेक्स्ट वीक से हम फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हम दिसंबर तक वेट नहीं कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ 2 मंथ्स होंगे हमारे पास फॉर द सेकेंड टर्म, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे हम और क्वेश्चंस पैरेलली हम करते रहेंगे, ठीक। एनी डाउट इन एलपीपी और एओडी? नो सर। अच्छा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के आई गेस टेस्ट निटकर सर ने सेव कर दिया था, टेस्ट दिया सबने? कुछ लक्ष्य मित्री टेस्ट दिया था किसी ने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी? होमवर्क मेरा उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। अच्छा बच्चा आपका कंप्लीट नहीं हुआ था, ओके। लक्ष्य मित्री सर आया नहीं था। आया नहीं था, अच्छा उन्होंने मुझे बताया था, अपलोड कर दिया था, सो ठीक है। इफ यू हैव द टाइम दिस वीक प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एंड इस वीक टेंजेंट्स एंड नॉर्मल रिवाइज कर सकते हैं आप, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ठीक है। सो टिल संडे 1 या 2 दिन में आपके अपलोड हो जाएंगे टेस्ट पेपर्स, सो टिल संडे प्लीज जब भी आपके पास टाइम हो प्लीज गिव द टेस्ट ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल।
ठीक है, सो डू द होमवर्क, नेक्स्ट वीक डाउट डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank you. सर। ओके, वेलकम। ओके, लक्ष्य, लक्ष्य, कैन यू हियर मी? लक्ष्य, आप म्यूट पे हैं बच्चे, अगर आप बात कर रहे हैं कुछ। Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, हमें, मुझे याद नहीं रहा, हमें डिटर्मिनेंट्स करना था। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन ट्राई किए थे लक्ष्य, एनी डाउट? Yes, sir. That is our doubt. डाउट है? जस्ट गिव मी अ मिनट। जी लक्ष्य, बताइए, व्हाट्स योर डाउट? So exercise 4.4, question number 5. Exercise 4.4, question number 5th. Yes, sir. Okay, so then the value of the determinant is given by, ठीक है, so thanks to fifth, उसने determinant दे दिया आपको a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33. सो उसने कहा डिटर्मिनेंट क्या होगा, ऑप्शंस आर दिस वन, है ना, बुक है आपके पास। सो हमने एक नोट किया था लक्ष्य, हाँ, अगर हमारे पास को फैक्टर्स होते हैं एंड वी आर मल्टीप्लाइंग द को फैक्टर्स विद एनी ऑफ द रो, मतलब फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद को फैक्टर, उसी के को फैक्टर से, देन व्हाट वी विल गेट, क्या मिलता है हमें, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। याद है लक्ष्य? Yes, sir. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? D. बी? देखिए सेकेंड इज D. D. डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक Yes, है, sir. एनी अदर डाउट? Yes, sir. सर ये एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 13 में ओ किस चीज को रेफर कर रहा है? ओ इज द नल मैट्रिक्स, यानी उसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है, अब ओ क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा या 3 होगा, देखते हैं। विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Yes. सो क्वेश्चन 13 इज, if a is equal to 3 1 minus 1 2, show that a square minus 5a plus 7i is equal to null matrix. Okay, hence this is a very good question, hence find a inverse, hence find a inverse. अब a inverse का हमें formula पता है, that how can we calculate the inverse of a matrix, but always remember in a question अगर वो कहता है hence find a inverse, ठीक है, तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करना है। उसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अच्छा, अब a का ऑर्डर क्या है? 2/2. 2/2। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी इक्वेशन में आपके पास जितने भी मैट्रिसेस हैं वो ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सबका ऑर्डर सेम होता है।
है ना, क्योंकि हम ऐड और सबट्रैक्ट कब करते हैं जब ऑर्डर सेम है। सो ओ का ऑर्डर क्या होगा, 2/2। 2/2 रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शो दिस। यहाँ आपको सारी वैल्यूज पुट करनी थी, आपको पुट करना था लाइक दिस 3 1 -1 2, नेक्स्ट 3 1 -1 2, फिर -5 3 1 -1 2 प्लस 7 I का मतलब 1 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, दिस 0 0 0 0, हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अ नल मैट्रिक्स। ये पार्ट तो हो जाएगा लेक्चर। यस सर। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं, हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स हमें फाइंड करना है फ्रॉम दिस, डायरेक्टली नहीं करना है। इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया देन यू विल नॉट गेट द मार्क्स। ठीक, सिर्फ इक्वेशन के मार्क्स दे देंगे, कैलकुलेट करने के नहीं देंगे आपको। सो कैसे सॉल्व करना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ। ऑलवेज रिमेंबर, जिससे हमारे पास इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 3y, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन विद 2 3 4 एनी मैट्रिसेस में जो इक्वेशन है हम उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी मैट्रिसेस। जैसे फर्स्ट है, सो हम कहते हैं कि मल्टीप्लाई वन बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट ऑलवेज रिमेंबर कि मैट्रिसेस अगर है और इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद एनी मैट्रिक्स, देन एदर यू कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस साइड, और फ्रॉम दिस साइड। व्हाट डज दिस मीन, प्लीज नोट दिस, हम इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें फ्रॉम दिस साइड, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई ए इनवर्स। सो हमने फ्रॉम दिस साइड अगर मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स स्टार्टिंग में आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि आपने यहाँ लिख दिया कि ए इनवर्स ए स्क्वायर -5 इंटू ए इनवर्स, ये ठीक नहीं है। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग अदर यू कैन मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस साइड और फ्रॉम दिस साइड। ठीक है लक्ष्य, यस सर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वी नो दैट कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, है ना, ये हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर को वी कैन राइट ए इंटू ए -5। नाउ ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा, डिटरमिनेंट है आई। आई। ठीक है, अब आई को आप जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। सो ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई किया, यू गेट 7 एंड यू गेट ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, यस नाउ ए इनवर्स इंटू ए कितना हो गया, आई इंटू ए -5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ i इंटू ए कितना हो जाएगा, अगेन ए -5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब क्या करना है आपको, 7a इनवर्स दिस इज इक्वल टू, इसको वहां शिफ्ट कर दीजिए, -a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1/7 -a प्लस 5 इंटू आई। सो ए इनवर्स फाइंड करना है फ्रॉम दिस। अब ए पुट करना है, आई पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। इस पर सॉरी लक्ष्य क्लियर हुआ ये? यस सर। सर जो बाकी नीचे बाकी हैंड्स के लिए रखे हैं फाइंड इनवर्स, ऐसे ही करना है। सब ऐसे ही करना है, जब भी हैंड से आता है तो ऐसे ही करना है, डायरेक्टली फाइंड नहीं करनी है वैल्यूज। ओके ओके, एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, स्टार्ट करें फिर। यस नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, और वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बोथ। तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है, वी विल यूज दिस टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो हमारे पास पहले था कि हम चेक करते थे कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। एक बार 10th का पार्ट हम रिवाइज करते हैं। सो 10th में वी हैव डन यू हैव डन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। सो हमारे पास 2 केसेस क्या होते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन है एंड दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। फर्स्ट केस ये हो गया। और पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वी हैव 2 स्ट्रेट लाइंस
and these are parallel. Third possibility क्या हो जाती है? We have two straight line और वो overlap कर जाती है फिर, ठीक है. Second जैसे हमारी line है, this will overlap on this. So first क्या हो जाता है? First होता है unique solution, only a single solution. Second क्या होता है? Many solution. Third क्या होता है? Sorry, this is unique. पैनल वाला नो सॉल्यूशन. हाँ, this is no solution and this is many solution. ठीक है, ये क्लास 10th में आपने किया था. सो पहले हम डिटर्मिनेंट्स में चेक करते थे यूनिक सॉल्यूशन. अच्छा, इसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं. दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट, और ये इनकंसिस्टेंट. सो पहले हम चेक करते थे कंसिस्टेंट है या नहीं. अब वो हमारे सिलेबस में नहीं. ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? वी जस्ट नीड टू सॉल्व द इक्वेशन. तो अगर वो इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन ही एग्जाम में देगा. ठीक है, तो हम वो पार्ट नहीं करेंगे. कंसिस्टेंट कब होता था, इनकंसिस्टेंट कब था, हम पार्ट नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो कैसे करना है हमें? बहुत सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2. a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ठीक है, सो वी विल लेट मैट्रिक्स A हम लेट करेंगे विद द कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3. ठीक है, x हम लेते हैं x y z एंड देन b हम लेते हैं d1 d2 d3. हमेशा ऐसे लेंगे. ठीक है लक्ष्य. तो हमने क्या किया? वी हैव दीज इक्वेशंस. ये जो हमने हमारे कांस्टेंट थे, विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट वी फॉर्म दिस मैट्रिक्स. सेम सीक्वेंस लिया है, a1 b1 c1 दिस. विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स वी फॉर्म दिस मैट्रिक्स x y z, एंड विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट वी मेक दिस मैट्रिक्स d1 d2 d3. ठीक है लक्ष्य, इतना क्लियर हुआ? यस सर. व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम a into x करते हैं देन वी विल गेट b. ठीक है, ये इक्वेशन हमें गिवन है. अगर हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दिस, करते हैं हम यहाँ. ठीक, दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. इसको अगर हमने x से मल्टीप्लाई किया x y z, तो क्या क्या होगा ये? देखिए, दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दिस. सो a1x, और इसको हम इक्वेट कर रहे हैं विद d1 d2 d3. तो क्या हुआ? ये मल्टीप्लाई हुआ विद दिस a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें विद दिस मल्टीप्लाई विद दिस, तो हमारे पास वही आ गया इक्वेशंस. ठीक है लक्ष्य. यस सर. So अगर हमें equations given है, equations are given, then we can let matrix A with the coefficient of x y z, x variable हो जाएगा, b हो जाएगी हमारी values, and we can say ax is equal to b. इतना clear वो? यस सर. Okay. अब क्या करना है? We need to find the value of x. So हम क्या करते हैं? Let this be first, इसको multiply कर देते हैं with a inverse. Multiply 1 by a inverse. ठीक है, सेम वही हम एक साइड से मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस. सो a इनवर्स इनटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स b. नाउ व्हाट इज a इनवर्स इनटू a? I always remember a inverse into a is identity. Identity into any matrix will remain same matrix, is equal to a inverse b. ठीक है लक्ष्य. यस. So if we need to find the value of x, तो हम क्या करेंगे? हम पहले मैट्रिसेस लिखेंगे, we will find the inverse of a, और फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे with b, we will get this answer.
ठीक है, लक्ष्य इसको प्लीज नोट कीजिए, देन वी विल ट्राई वन क्वेश्चन, देन योर क्लास इज ओवर। डन सर। ओके लक्ष्य, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन इज 2x plus 5y is equal to 1, 3x plus 2y is equal to 7। ठीक है लक्ष्य, जस्ट टेल मी व्हाट इज a? a क्या होगा? इसके कोफिशिएंट्स है ना, 2, बताइए। 3 and 5, 2. 2 3 5 2। व्हाट इज x? X, XY, वेरी गुड। व्हाट इज b? 1, 7. 1 7। टेल मी द फॉर्मूला। x is equal to A inverse B. a inverse b। x is equal to, ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द a inverse। a inverse का फॉर्मूला क्या होता है? A inverse 1 upon A determinant हम्म, into adjoint of A. एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इसका एडजॉइंट आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं? मैं डायरेक्टली लिख दूं आंसर। Yes. एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इसको हम इंटरचेंज कर दें 2 2 Sign change. -5। ठीक है, बट ये एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, तो ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड कर देते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होगा? 4 - 15, सो -11। ए इनवर्स कितना हो गया? 1 by -11, 2 -5 -3 2। ठीक है, नाउ Yes. एक्स क्या था? ए इनवर्स बी। तो क्या करना है हमें? x इज इक्वल टू -1 by 11, फिर ये मैट्रिसेस है 2 -5 -3 2, इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद b। b क्या था? 1 7। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, x इज इक्वल टू -1 by 11। अब आपकी चॉइस है, आप यहाँ 1 by 11 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, फिर मल्टीप्लाई करते, दिस इज योर विश। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 -35, तो कितना हो गया? -33। देन -3 + 14, -3 + 14 कितना हो गया? 11। ठीक है, अब 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो x कितना हो गया? और नेगेटिव से भी 3 -1। x होता क्या है? xy 3 -1। x क्या हो गया? 3, y क्या हो गया? -1। क्लियर हुआ लक्ष्य ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, सो ये ऑर्डर 2 था, सिंपल इक्वेशंस थी, x एंड y, जल्दी हो गया, बट नॉर्मली 3 इक्वेशंस आती हैं एग्जाम में। ठीक है, so I will give you the homework. Homework is try exercise 4.6, question number 7 to 14. ठीक है, not 14, 7 to 16, plus miscellaneous question number 16, ठीक है, question number 18, 19, मिसलेनियस में मैं कंप्लीट ही मार्क करवाता हूँ, 1 भी करना है। ट्राई टू डू 3, अगर ये डायरेक्टली हो जाता है देन वेल एंड गुड। 7th करना है, 8th करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, और ट्राई टू डू 9 10। ठीक है, अगर डायरेक्टली हो रहा है वेल एंड गुड, प्रॉपर्टी से तो हो जाता है, डायरेक्टली भी एक बार ट्राई कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमें करनी नहीं। ठीक है, लक्ष्य ये प्लीज कंप्लीट कीजिए, आपका डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा, देन नेक्स्ट वीक वी विल डू द इनवर्स। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. ओके, वेलकम।